गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास का ये पार्ट नंबर सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा था एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ा था। मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी दो तरह के होते थे, एक डिस्क्रीट मास ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड कंटिन्यूअस मास ऑफ द बॉडी। डिस्क्रीट मास ऑफ द बॉडी का मीनिंग था जब मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो, एंड जब मास पूर्ण रूप से हर एक पॉइंट पे, बॉडी के हर एक पॉइंट पे अगर अवेलेबल हो तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मास ऑफ द बॉडी। मास का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह से हुआ था कंटिन्यूअस में। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम लोगों ने टर्म डिफाइन किया था लेमडा m अपॉन एल। सेकेंड था सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोगों ने कहा था सिग्मा मास अपॉन एरिया। एंड थर्ड था वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट किए थे, एंड ये था मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस क्लास में हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला को पढ़ेंगे। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे फॉर डिस्क्रीट मास ऑफ बॉडी। फॉर डिस्क्रीट मास ऑफ बॉडी, सपोज कर लीजिए एक सिस्टम है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट। ये रहा इसका पॉइंट ओ। ये मास रहा m1, जिसका पोजीशन वेक्टर रहा कितना r1। ये रहा मास m2, जिसका पोजीशन वेक्टर रहा r2। सिमिलरली ये रहा मास mn, जिसका पोजीशन वेक्टर रहा rn। सपोज कर लेते हैं इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कहलाएगा RCON। तो सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट बॉडी के लिए डिफाइन किया गया R सेंटर ऑफ मास इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n MIRI डिवाइडेड बाई समेशन I इक्वल टू 1 to n MI। इस पर्टिकुलर वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग कैपिटल M बोलेंगे, तो ये बन जाएगा 1/m समेशन I इक्वल टू 1 to n MIRI। ये रहा R ऑफ सेंटर ऑफ मास।
इस आर ऑफ सेंटर ऑफ मास को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर of center of mass. Okay, we know that R center of mass equal to X center of mass I cap plus Y center of mass J cap plus Z center of mass K cap. X center of mass is called X coordinate of center of mass, X coordinate of center of mass of body. Formula is 1 upon m summation I equal to 1 to n mi xi. ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास है. सेकेंड है y सेंटर ऑफ मास. इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 1 अपॉन m समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi yi. सिमिलरली z कोऑर्डिनेट यानी z सेंटर ऑफ मास, इसको हम लोग बोलेंगे z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये जो z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन m समेशन I इक्वल टू 1 टू n mi zi. ओके, नेक्स्ट है center of mass for two particle system. Center of mass of two particle system. Two discrete particle of mass m1 and m2. They are separated by a distance of r. Suppose their center of mass is located at this point, which is at a distance of r1 from m1 and r2 from m2. Suppose a origin at the center of mass. यहाँ पे हम लोग origin को create कर लेते हैं. Origin at center of mass. We know r center of mass equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. Here r center of mass is at origin, so the value of r center of mass equal to 0. m1 equals to m1 and value of r1 is negative because r1 is left side of the origin plus m2 into plus का r2. r का साइन r2 का साइन पॉजिटिव लिया गया है बिकॉज इट इज राइट साइड ऑफ ऑरिजिन है डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज
m1 plus m2. If we multiply cross, then we get m1 r1 equal to m2 r2. So here r2 equals to m1 r1 divided by m2. This is equation number first. From figure, we know that r1 plus r2 equals to r. From figure, r equals to r1 plus r2. Now put the value of r2 in equation number second. Now put value of r2 equals to m1 r1 divided by m2 in equation number second. We get r equals to r1 plus m1 r1 divided by m2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m2 इंटू r इक्वल टू m2 इंटू r1 प्लस m1 इंटू r1. We get the common term r1, so m1 plus m2 into r1 equals to m2 into r. So r1 equals to आ गया m1 plus, so r1 equals to m2 into r divided by m1 plus m2. Location of center of mass from mass m1. Similarly, r2 equals to m1 r divided by m1 plus m2. यह है लोकेशन ऑफ मास position of center of mass of two particle system from m1 from m2, and this is the position of center of mass of the body. Position of center of mass of body, center of mass of two particle system from m1. Okay, we take an example of two particle system. Suppose mass m1 equals to 2 kg and m2 equals to 3 kg and distance between both is 5 meter. Then the position of center of mass, say this is r1 and this is r2. This is the center of mass. We find r1 and r2. Find r1 and r2. Solution. r1 equals to m2r divided by m1 plus m2. So m2 equals to 3 into r, that is 5, divided by 2 plus 3 equal to 3 meter, and r2 equals to m1r divided by
m1 plus m2 equal to 2 into 5 divided by 2 plus 3 equal to 2 meter. So from this example, we conclude that the center of mass of two particle system lies along the line joining of two particles and nearer to the heavier mass. First point, center of mass of two particle system, center of mass of two particles system lies at a line joining of two particles nearer to the heavier nearer to the heavier nearer to the heavier mass. Okay. Second example, suppose m1 equals to 2 kg and m2 equals to 2 kg and distance between two is 4 meter. So we know center of mass is located at this position. This is the position R1 and this is the position R2. Find R1 and R2. So R1 equals to m2r upon m1 plus m2 equal to 2 into 4 divided by 2 plus 4, that is 2 meter, and R2 is also equal to R minus R1, that is 2 meter. So from this example, we conclude that the center of mass of two particles having equal mass lies at the line joining of two particles at the middle point. For equal mass of two particle system, for equal masses of two particle system, particles system, center of mass is at midpoint of these these particles. Okay. Next question we have, x-axis, this is the y-axis, and this is the origin. origin पे डिस्क्रीट मास रखा हुआ है कितना, m. यहाँ पर भी मास m. here is mass also m. here mass is also m. स्क्वायर साइड है तो सबका साइड कितना मान लेते हैं a.
Find location of center of mass. Find coordinates of center of mass. Find coordinates of center of mass of discrete system. Discrete system. सॉल्यूशन, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट देखिए, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4. इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड पार्टिकल, इसको थर्ड पार्टिकल एंड इसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्टिकल. तो सबका मास इंटू कोऑर्डिनेट m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस m प्लस m प्लस m. तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 2ma डिवाइडेड बाई 4m इक्वल टू a अपॉन 2. Similarly, y center of mass equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 divided by m1 plus m2 plus m3 plus m4 इक्वल टू फर्स्ट मास यानी m इंटू कोऑर्डिनेट 0 प्लस सेकेंड m इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस m इंटू y कोऑर्डिनेट a प्लस का m इंटू y कोऑर्डिनेट a डिवाइडेड बाय m प्लस m that is y center of mass equals to 2ma divided by 4m equal to a by 2. Here discrete system of particles, here system of particles equal to 2 dimension along present along xy plane. So z center of mass equal to 0. This implies that coordinate of center of mass, that is x center of mass, y center of mass and z center of mass equal to a by 2 comma 0. Okay, शॉर्टकट कैसे करेंगे स्टूडेंट देखिए, z axis, this is x axis and this is y axis. Particle here, here, here. This is the mass m, mass m, mass m and mass m. Side A, side A and side A.
ये दोनों इक्वल पार्टिकल है, सो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट का इसका सेंटर ऑफ मास इक्वल मास है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा। इसका मास को हम लोग मान लेंगे 2m एंड इसके मास को कितना मान लेंगे स्टूडेंट्स, m। दोनों के बीच अभी भी गैप कितना है, a है। तो अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, कितना जगह स्टूडेंट देखिए 4m, और ये जो लोकेशन आएगा कितना स्टूडेंट देखिए a/2, और ये लोकेशन कितना जगह स्टूडेंट देखिए a/2। तो इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा स्टूडेंट्स a/2 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना जगह स्टूडेंट देखिए a/2। ओके, एक लाइन पे स्टूडेंट्स 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, p, q and r। p, q, r are 3 identical particles, 3 identical particles। Suppose this is x coordinate and this is y coordinate, here origin, and all particles having radius small r। सबका रेडियस मान लेते कितना, 1 मीटर मान लेते रेडियस। आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m, ऑफ मास m and mass m equal to 1 kg, mass m equal to 1 kg, mass m equal to 1 kg and radius r equals to 1 meter। Find center of mass, find center of mass of given system, center of mass of given system from origin। ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं 5 मीटर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए, जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस पूरे फिगर का जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा बिल्कुल। इस सिस्टम का अगर ये सिस्टम अगर कंसिडर किया जाए, अगर ये सिस्टम अगर हम लोग कंसिडर करें, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा देखिए, इसके सेंटर पॉइंट पे। तो ये रहा सेंटर पॉइंट, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। अगर सही से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट कितने दूर हो गया, 2 मीटर। ये पॉइंट कितने दूर हो गया स्टूडेंट्स, 1 मीटर। और ये पॉइंट कितने दूर है स्टूडेंट देखिए, 5 मीटर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 5 + 2 + 1 that is 8 meter, and y coordinate of center of mass equal to 0, and z coordinate of center of mass is also equal to 0 meter। okay, सेकेंड यानी बी पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फॉर
for continuous body. Z coordinate, X coordinate, and this is Y coordinates. Suppose a particle of mass capital M. We have to consider a small element of mass dm, a small element of mass dm, and their position vector equals to r. So center of mass of the given system यानी r center of mass equal to 1 upon m integration dm into r This is the formula for finding the center of mass of continuous body. Steps to find इस r को स्टूडेंट सब लिख सकते हैं r center of mass is equal to x center of mass I cap plus y center of mass j cap plus z center of mass k cap. तो इसका x center of mass का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट कहलाता है ये, x center of mass का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 upon m इंटीग्रेशन dm into x. y center of mass का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 upon m इंटीग्रेशन dm into y. एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 upon m इंटीग्रेशन dm into z. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा स्टेप्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी. स्टेप्स टू फाइंड center of mass of continuous body. Steps number first, find mass of elemental elements, that is dm equals to lambda by dm equals to lambda into dx for linear body, dm equals to sigma into dA for surface body, and dm equals to rho into dV for volume body, volumetric body. सेकेंड पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड coordinates of center of mass of elemental mass, that is x, y, z. Third point, now find x center of mass as y center of mass
and z center of mass as 1 upon m integration dm into x, y center of mass equals to 1 upon m integration dm into y, and z center of mass equals to 1 upon m integration dm into z. Okay, some key points. नोट का फर्स्ट पॉइंट, if body is symmetric about y axis, if body is symmetric about y axis, then y coordinate of center of mass, then y coordinate of center of mass equal to 0. Suppose an example, x and this is y. Suppose a half ring half ring. This figure is symmetric about y axis, symmetric about y axis, so y center of mass equal to 0. Second point, if body is present in xy plane, if body is present in xy plane, then z coordinate of center of mass equal to 0. Then z coordinate of center of mass equal to 0. Same example, half ring इस फिगर में स्टूडेंट्स, यदि बॉडी हमारा सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है तो इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा स्टूडेंट? देखिए 0. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा. यदि बॉडी हमारा yz प्लेन में है, xy प्लेन में है, तो इसका z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगा. क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलेगा हेवियर मास की तरफ. तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट 0. तो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड z कोऑर्डिनेट कितना होगा स्टूडेंट्स? बताइए, 0 होगा. ओके, इस क्लास को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं. इस क्लास में आपको सिखाया गया है कि किस तरह से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम एंड फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम. कंटिन्यूअस सिस्टम में हम लोग इंटीग्रेशंस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग को एलिमेंटल मास काटना पड़ता है. उस एलिमेंटल मास का हमें मास निकालना पड़ेगा एंड उस एलिमेंटल मास का हमें x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास.
and then we have to finally use the formula for x coordinate of center of mass, y coordinate of center of mass and z coordinate of center of mass. कुछ आपको की पॉइंट्स लिखाए गए हैं। यदि हमारा कोई बॉडी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है देन उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। यदि बॉडी प्रेजेंट है एक्स वाई प्लेन में देन उसका जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 होगा। इस क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ मास रॉड पे कैसे निकाला जाता है, सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग पे किस तरह से निकाला जाता है, सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का किस तरह से निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडीज को कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड एंड हॉलो कोन पे किस तरह से निकाला जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर का किस तरह से, हेमी स्फीयर का किस तरह से निकाला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जो भी वीडियोस को अगर समझने में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियोस को बार बार रिवाइंड करके देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी इसको फ़ायदा उठा सकें। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।